Hey guys, welcome back to my channel, the Fusion YouTuber. I'm Diya Chawla. So in today's video, I'm gonna try a new trend or say technique which is very famous right now, like trending में जा रही है. That is Mary Phillips makeup technique. वॉट शी डू शी जस्ट मतलब ऐसे नेचुरल सा अपना फेस पे वो कुछ करती हैं. इवन उन्होंने बहुत सारी एक्ट्रेसेस पे भी ये वाली टेक्निक अप्लाई की हुआ है सो डैट उनका फेस जो है नेचुरली स्कल्प्ट लगे एंड मेकअप बिल्कुल फ्लॉलेस नेचुरल सा लगे. सो today we're gonna try this as well, so let's start. So the very first step is to moisturize your face really well, and I'm using a heavy moisturizer today because my skin needs a heavy moisturizer today. Now I'm using this primer अपने फेस पे बिकॉज मुझे ये स्क्रबिंग क्रीम जैसा लगता है. प्राइम तो कुछ खास ऐसा करता नहीं है. सो स्क्रबिंग क्रीम की जगह मैं ये यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे थोड़ा सा ग्लोई चाहिए. अगर आपको मैट चाहिए देन आप इसको स्किप कर सकते हो. For the contour, I'm using this concealer by Inside HD concealer in the shade tan, rich tan, to contour my face. एंड हम बेसिकली करते क्या है, फाउंडेशन के बाद में कंटोर ब्लश करते हैं, बट यहाँ पे बिफोर होगा. सो आई एम डूइंग दैट, टेकिंग सम ऑन बैक ऑफ माई हैंड. A liquid illuminator or highlighter underneath my foundation. And now it's time for the main tip or technique, and that is applying a foundation all over this makeup जो अभी तक हमने करा है, but not with a sponge, not with a foundation brush, but a powder brush or a fluffy brush. So I'm using this powder brush जो कि काफ़ी ज़्यादा fluffy है to like blend my foundation, and I'm using this foundation. This is Mamaearth का foundation because ये थोड़ा ग्लो वाला था and I don't want a matte foundation for today's look, so ये वाला यूज़ कर रही हूँ. You need to take your foundation on a fluffy brush. आज ही वॉश करना पड़ेगा and start it. Okay, it worked. ब्लेंड भी अच्छे से हो गया, शुक्र है. Now you have to powder only your under eyes, so I'm doing that. Now set your base with a setting spray or a makeup fixer. This is how my base looks right now. हल्का सा ग्लो है, थोड़ा स्कल्प्टेड फेस लग रहा है बट ऑल दो नेचुरल सा लग रहा है. सो आई विल क्विकली फिनिश माई रेस्ट ऑफ द मेकअप, आईज एंड लिप्स, एंड देन देखते हैं क्या होता है. एंड हेयर आई एम विद माई कंप्लीट मेकअप लुक एंड दैट्स हाउ इट लुक्स. काफ़ी ज़्यादा नेचुरल. थोड़ा सा ब्लश कम लग रहा है मुझे बिकॉज मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाती हूँ ताकि फेस बिल्कुल ओवर पेल ना लगे. थोड़ा अगर मैं साइड टर्न करती हूँ तो दिखता है, अदरवाइज आई थिंक ब्लश और कंटोर थोड़ा और ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत थी. मैंने थोड़ा कम अप्लाई किया, बट दैट्स हाउ इट लुक्स. बिल्कुल भी केकी नहीं है, काफ़ी सही है. सो यू कैन ट्राई दिस, बट आई थिंक मैं ट्राई नहीं करूँगी दोबारा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू ruin माई powder brush. So yeah, that was it. So yeah, that was all for the video. I hope you find it helpful and useful, and आपको न्यू ट्रेंड टेक्निक अच्छी लगी होगी जो मैंने ट्राई की. If yes, then like this video, share with your friends and family, and subscribe to my channel also.